Assalamu alaikum. Welcome to my channel ETA Preparation. Hello student, how are you? Student, today we will discuss MCQs of chemistry chapter alkyl halide part 2. So let's start. 11वां क्वेश्चन दिया गया है, which alkyl halide out of the following may follow both SN1 and SN2 mechanism. Which alkyl halide out of the following may follow both SN1 and SN2 mechanism? दर्जा झेल में से कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो कि SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In elimination reactions of alkyl halide, which site is more susceptible for the attacks of base? In elimination reaction of alkyl halide, which site is more susceptible फॉर द एक्ट ऑफ बेस? तो एक्ट ऑफ बेस के लिए कौन सी एलिमिनेशन जो है या कौन सी साइड ज़्यादा सस्पेक्टेबल है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. हाइड्रोजन साइड जो है ये ज़्यादा सस्पेक्टेबल है. When 2 mole of alkyl ethyl chloride react with 2 mole of sodium in the presence of ether, what will be formed? जब 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड दो मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करता है ईथर की मौजूदगी में, तो क्या बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन है, तो बनता है 1 मोल ऑफ ब्यूटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ether used in Wurtz synthesis is the ether used in Wurtz synthesis is किस तरह एसिडिक, बेसिक, एक्वेस, ड्राई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी ड्राई ether used in Wurtz synthesis. Next question. When carbon dioxide is made to react with ethyl magnesium iodide followed by acid hydrolysis, the product form is when carbon dioxide is made to react with ethyl magnesium iodide followed by acid hydrolysis, the product formed is propanol. ऑप्शन नंबर प्रोपेनोइक एसिड यानी ऑप्शन नंबर बी. The product is formed propanoic acid. Next question. Grignard reagent is reactive due to the polarity of carbon magnesium bond. Right option is D. Now is C. The polarity of carbon magnesium bond. Due to this reason, Grignard reagent is reactive. Next question. SN2 reaction can be best carried out with SN2 reaction
can be best carried out with. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ये SN2 मैकेनिज्म के लिए बेस्ट है, और जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये SN1 के लिए है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ये SN1 SN2 दोनों में आते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका है इस राइट आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन bimolecular reaction involve elimination bimolecular reaction involved second order kinetics, option number B। next question, for which mechanism the first step involved in the same, for which mechanism the first step involved in the same। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, E1 and SN1 mechanism the first step involved in the same। एंड लास्ट क्वेश्चन, बट इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर अब तक आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली MD-CAT, E-CAT, ईटा, इंट्रीटेस एक्सेट्रा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन, द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी राइट ऑप्शन इसका है ए, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। This was the last question of alkyl halide part 2. Thank you for watching. Please share it with your friend, your class fellow, and also subscribe the channel, like the video. Thank you.